हम सोची नहीं थी सर ठीक हो जाएगी करके, लेकिन सही में ठीक हो गई। मेरा नाम प्रतिमा राठौर है। मैं जो है अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूँ। मुझे सांस लेने की तकलीफ़ कम से कम 10-11 साल से हो रहा है, और मैं कितने सारे हॉस्पिटल में मैं हर साल में जाती हूँ, दिखाती हूँ, पर उसका कोई मतलब बेनिफिट मुझे कभी नहीं मिला। और हम मतलब मुझे एक हार्ट का भी प्रॉब्लम, VHD प्रॉब्लम है, तो मैं वही सोच रही थी कि शायद उसके वजह से ही मुझे हो रहा है। पर रिसेंटली मेरा अंडमान में मेरा CT स्कैन किए, तो जिसमें मुझे पता चला कि मेरा जो आर्टरी है वो मतलब जो हार्ट से होके आ रहा था आर्टरी, वो मेरा फूड नली और सांस का नली को कंप्रेस कर रहा था, जिसके वजह से वो नली जो है दब गया था, जिसकी वजह से सांस लेने के लिए तकलीफ़। वो पता चलते साथ ही फिर मैंने क्या किया कि मेरे भाई हैदराबाद में हैं, तो भाई को हम इस तरह बताई कि इस तरह हार्ट से होके आता हुआ आर्टरी जो है वो फूड नली और सांस की नली को दबा रहा है, तो जो सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो रहा है। तो भाई क्या किए कि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय दीक्षित सर से बात किए तो फिर उनसे अपॉइंटमेंट लिए। फिर हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड से इधर हैदराबाद में आए। फिर 4 जुलाई को हम लोग आए, विजय दीक्षित सर से हम लोग मिले। फिर मिलने के बाद में विजय दीक्षित सर देखे तो फिर बोले कि ये तो मेरा हार्ट से रिलेटेड नहीं है, आपका जो है आर्टरी का रिलेटेड है, तो आपका बाय बर्थ प्रॉब्लम है, तो जिसके वजह से डॉक्टर अमोल गुप्ता सर के पास भेजे। फिर अमोल गुप्ता सर भी पूरा सर्च किए, सब कुछ देखने के बाद फिर दोनों डॉक्टर मिलकर फिर मुझे प्रकाश गौरा सर के पास में फिर भेजे मुझे। फिर मैं प्रकाश गौरा सर के पास में गई। सर पूरा देखते साथ ही सर बोले कि हाँ इसका सर्जरी करना होगा। तो बहुत परेशान, लेकिन सर बहुत फेवर किए, बहुत अच्छे से बताए सारा चीज़। और मतलब इतना तकलीफ़, इतने साल से मुझे इतना तकलीफ़ था, लेकिन सर के बदौलत जो है आज हम यहाँ से ठीक होके जा रही है। और मेरा प्रॉब्लम जो था ये बहुत रेयर केस है, जो कि मतलब हम सोची नहीं कि इतना जल्दी अच्छा हम ठीक हो जाएगी। बट मेरा अभी मुझे बहुत आराम है। सर्जरी होके 15 दिन हो गया मेरा आज। और प्रकाश गौरा सर, अपर्णा मैडम, बहुत थैंक यू, मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपोलो हॉस्पिटल। Hi, I am Dr. Prakash Goura, consultant vascular and endovascular surgeon at Apollo Hospitals, Hyderabad. This is regarding the patient, Mrs. Pratima Rathore. She is a 45-year-old lady presented to us with progressive worsening dysphagia. That means that she was not able to swallow any food and she was not able to swallow even water when she presented to us. So after evaluation, we found that she has got a very rare congenital anomaly in the major blood vessels of the coming out from the heart. Mainly what happens is in everybody, in more than 95% of the patients, the aorta is the main blood vessel coming out from the heart, supplying almost all organs in the body. It is usually located on the left side of the body. So it comes from the left side, turns it into the thorax, and then comes into the abdomen and supplies the different organs. But this lady had a very rare congenital anomaly called right-sided aortic arch. The patient had a artery aorta coming from the right side of the body, and then along with that it was forming a constriction ring around the esophagus. Esophagus is the food pipe, that is whatever we swallow goes through the esophagus into the stomach. So this patient had a constricting ring forming around the esophagus formed by the right side aortic arch. Along with that, she also had an aberrant left subclavian artery. That is, subclavian artery is the one that supplies the left upper limb. Left subclavian artery, there was an aberrance along with the diverticulum, that is called a Kummerholz diverticulum. Along with that, the ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum is the connection between the venous and the arterial system when the child develops inside the mother's womb. As soon as the delivery happens, this will usually get closed. In her also it was closed, but it was forming a vascular tight ring. All these structures together, they were forming a tight ring, and it was progressive in nature. This compression was caused mainly to the esophagus, that is the food pipe, but there was also some constriction or some compression onto the windpipe as well.
So what we did is, after complete evaluation, we went through a left thoracotomy, that is left posterior lateral thoracotomy. We went inside and then we divided the vascular structures which are causing the compression onto the esophagus. So it's a very rare congenital anomaly causing progressive dysphagia, that is the patient was not able to swallow water as well, because it forms a tight ring, and as the patient grows the tightness increases. So this patient came, and once we released all the structures, now she is in post-op day 10, she is completely fine. She, from the post-op day 1 itself, the patient was able to swallow. She had a good meal after a long time on the post-op day 1. So the rarity of the congenital problem along with the rarity of the surgeries, whatever was performed, has come out with a good outcome. The patient is doing well and she is going back to her hometown in Andaman. Thank you.